बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम मॉरल स्टोरी पढ़ रहे हैं। मॉरल स्टोरी नंबर 11 है हमारा। स्टोरी फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स, स्टोरी फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। एक ही वीडियो में दो स्टोरीज होती हैं, याद रखिए। इसके अलावा भी मेरे और चैनल्स हैं, उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में के साथ जो वी का निशान है उनमें लिंक दिया हुआ है, वो भी लाजमी देखिए और सब्सक्राइब करें। अ रोलिंग स्टोन A rolling stone gathers no moss। लुढ़कता हुआ जो ना, वो किसी काम का नहीं होता, कहीं टुक। Birds and animals have had always been rivals। परिंदे और जानवर हमेशा आपस में हरीफ रहे हैं। Once they sat together and thought of choosing a common leader। एक दफा उन्होंने वो इकट्ठे बैठे सारे, मीटिंग की और एक ही लीडर के इंतखाब का फैसला किया। The leader was to be elected by majority vote as majority is authority। इसका इंतखाब, रहनुमा का, लीडर का इंतखाब वोट की कसरत से किया जाना था। Two candidates moved forward। दो कैंडिडेट सामने आए। The eagle was represented by the birds and the lion was represented by the animals। ईगल उकाब परिंदों की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा था और शेर जो है जानवरों की तरफ से। इन द वोटर्स द बैट गेन्ड इम्पोर्टेंस फॉर बोथ द पार्टीज। वोटर्स में बैट ने दोनों पार्टियों में ही अहमियत हासिल की। द बैट चेंज्ड साइड्स फॉर सेवरल टाइम्स। बैट कई बार जो है अपनी जगह बदल चुका था। शी वांटेड टू सपोर्ट द पॉसिबल विनर। वो चाहती थी कि जो है ना, चमगादड़ चाहती थी कि वो जो भी कामयाब हो उसकी सपोर्ट, एज इट इज वाइजली सेड, सपोर्ट करे। ही हु चेंज हिज लॉयल्टी एंड हिज फ्रेंड्स अगेन एंड अगेन कैन नेवर विन एनी honorable place। It was difficult to predict the winner। फाते का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। When the bat realized that lion could win, she said, I am going to vote for you। जब उसे अंदाजा होता है कि शेर जीतने वाला है तो वो कहती कि मैं तुम्हें वोट करने जा रही हूँ। इनफैक्ट आई एम एन एनिमल बिकॉज आई फीड माई offspring with milk। क्योंकि मैं जानवर हूँ और मैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हूँ। एज इट इज वाइजली सेड, जैसा कि कहा जाता है, डू नॉट बिहेव लाइक दोज हु बिलीव दैट माइट इज राइट। उनकी तरह रवैया अख्तियार ना करो जो यकीन रखते हैं कि। However, when she realized that the eagle enjoyed all more sport, she went to him and said, I'm going to vote for you। In fact, I have wings and I lay eggs। जब उसे अंदाजा होता कि ईगल जीतने जा रहा है तो वो उसके पास जाती है और उसे कहती कि मैं तुम्हें वोट करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पर हैं और मैं अंडे देती हूँ। At last the eagle, the election day came। At last the election day came and the lion won the election। आखिरकार इलेक्शन का दिन आया और शेर ये इलेक्शन जीत गया। ऑल एनिमल्स वर हैप्पी। बहुत सारे जानवर खुश थे। द बैट थॉट दैट शी हैड कन्विंस्ड द एनिमल्स। बैट ने चमगादड़ ने सोचा कि उसने जानवरों को खुश कर दिया था, मुतासर माइल कर लिया था। द एनिमल्स एंड बर्ड्स हैड ट्रू रिपोर्ट्स। परिंदे और जानवर सही रिपोर्ट्स रखते थे। सो द लायन सेड, I don't think you are one of us। You are a bird। The bat was much upset। Now she went to the eagle। The eagle knew that bat had played a double game। He said, go away, you
You feed your offspring and belong to animals. Now the bat realized that she, because of her own cleverness, had lost the favor of both the groups. अब चमगादड़ को अंदाजा हो गया था कि उसने अपनी ही चालाकी की वजह से दोनों पार्टी ग्रोहों की जो है हमायत खो दी थी. A whimsical fellow is destined to fail and to develop a long-lasting relationship. Story for brilliant students. ये है हमारे A rolling stone gathers no moss is a very famous proverb. It means that we should be honest and loyal in our dealings because he who changes his loyalty and his friends again and again can never win an honorable place. There is a well-known fable to illustrate the truth of this maxim. Birds and animals had always been rivals. Once they sat together and thought of choosing a common leader. The leader was to be elected by majority vote. Majority is authority. Two candidates moved forward. The eagle was represented by the birds and the lion was represented by the animals. Their supporters started canvassing for their candidates. In the voters, the bat gained importance for both the parties. The bat changed sides for several times. She was keen to know how who had the better chance to win. She wanted to support the possible winner. As it is wisely said, prosperity wins friends, but adversity tries them. It was difficult to predict the winner. It was a close contest, and each day of the fortune seems to swing one way or the other. When the bat realized that lion could win, she said, I am going to vote for you. In fact, I am animal because I feed my offspring with milk, as it is wisely said. Do not behave like those who believe that might is right. However, when she realized that the eagle enjoyed more sport, she went to him and said, I'm going to vote for you. In fact, I have wings and lay eggs. At last, the election day came. The lion won the election, and all animals were very happy. The bat thought she had convinced the animals. The animals and birds had true reports. So the lion said, I don't think you are one of us. You are a bird. The bat was much upset. Now she went to the eagle. The eagle knew that the bat had played a double game. He said, go away, you feed your offspring and belong to animals. Now the bat realized that she, because of her over cleverness, had lost the favor of both the groups. A whimsical fellow is destined to fail, to develop a long-lasting relationship. Have a nice day. Allah Hafiz. AG Ahmad एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आप
आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।